writing a research proposal or elements of research proposal. So in writing research proposal, there are many topics. So first we'll see elements of research proposal. It's very similar to can say first topic, but we'll get basic differences when we discuss one by one. And definitely step by step we'll go here. I want to make it easy for you people to write a research proposal because you want to submit the research proposal at the end of this course. And after submitting it, you have to submit it to can say any national agency or can say NGO to get financial assistance for your research. Okay. It is made mandatory for every student to write a research proposal during PhD coursework or MPhil coursework or entire can say PhD, maybe can say working for 3 years or 4 years for your PhD. During that time, at least you write one proposal, submit it to can say financial assistance to any agency, and then you can obtain some financial assistance for that research. So it is necessary to understand how to write a research proposal, but writing final proposal, it takes more time, or can say if you don't understand it properly how to write it, so not get funding for that. So mostly some projects or can say reports or can proposals are rejected based on certain things. So first we'll see one by one all the steps how to write a research proposal. But before that, what are the elements of research proposal? So first that we have seen what are the steps in can say research. So accordingly, we'll go for elements of research proposal and what are these. So basically, in any research proposal, you need to have a title page. Then you need to have abstract, then table of content, then introduction, that's background of research, the literature review, objectives and hypothesis, research methodology, is what design and methods, expected conclusion or expected outcome of your research, or what are the implications of your research, references or bibliography, and finally you have to give the budget. So these are total 10 elements. They should get reflected in research proposal. Otherwise, your proposal will not be accepted for financial assistance. I think this is what a general theme. It may vary, can say little according to subject. Suppose you're writing subject in languages or can say propose in languages or can writing can say proposal in science or can say in commerce or management. थोड़ा सा फर्क हो सकता है, but most probably all these steps are required. So we'll see one by one what are the elements of this research proposal and how to can say handle each element carefully so as to get final proposal in good quality, can say ideal proposal, and you can submit it to financial assistance and finally get some assistance for that. Okay. Now what is title page? Title of the proposal. So on this title page, you should write the name of principal investigator. If you are single person or sole person writing proposal, so you are the principal investigator of that proposal, you have to write the name. Then if suppose you're having co-investigator with you, the co-investigator ka naam aana chahiye. Name of institution or agency to whom it is to be submitted. इसको आपको सबमिट करना है. If you want to submit it to can say University Grants Commission, तो उनका नाम आ जाएगा. If you want to submit it to can say NGO, तो NGO का नाम आ जाएगा. Or if you are submitting it to Pune University or BCUD or BOD, तो उनका नाम आएगा. So likewise, name the institution or agency to whom it is to be submitted. इसका नाम आएगा. The name and address of affiliating institution. Where you are working or where you are serving, जहाँ पर आप सर्विस करते, जहाँ पर आप काम करते, उनका एड्रेस, उस इंस्टीट्यूट का एड्रेस. सपोज यू आर सर्विंग इन अ कॉलेज, तो नेम ऑफ कॉलेज एंड एड्रेस ऑफ द कॉलेज इज एसेंशियल ऑन द फर्स्ट पेज और टाइटल पेज. और इफ यू आर वर्किंग इन रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक एनसीएल और कैसे अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट और मे बी कैन से इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो उनका नाम वहां पर आ जाएगा. और सपोज यू आर वर्किंग इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, मे बी कैन से एनजीओ, सो यू हैव टू राइट name and address of that institution. So name and address of affiliating institution and then month and year of submission. कौन से मंथ में और कौन से साल में आपने वो सबमिट किया है. So this is what the thing, these things should be can say reflected on title page. I not given here exactly what title page and how it look,
So we'll see it in, can say, later part, how, when we are discussing about how to write proposal, final proposal for financial assistance. So title of the proposal should give a brief title of the proposal, then name of the principal investigator, name of the institution to whom you have to submit it, name and address of the affiliating institution, and month and year of submission. So this is what uh, the title page. Okay. Next, after title page, you have to have a content, a table of content or index. Index होना जरूरी होता है और table of content बोलते हैं उसको, वो जरूरी होता है. So in this table of content, there should be abstract. ये टेबल ऑफ कंटेंट का सेकंड पार्ट आ जाएगा. देन इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च, देन लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, बराबर, ये सब रिसर्च मेथोडोलॉजी, expected conclusion, reference and budget. If you have some, can say, sub points in this, again you can add sub points in each topic. So this will be a table of content, so that will guide the reviewer or analyzer और कैन से फाइनेंसर, जो आपको फाइनेंस करने वाला है, आपको असिस्टेंट देने वाला है, उनके लिए ये गाइडलाइन होगा कि हाउ कैन से you have presented your entire proposal in this particular sequence. So you have to write the title of the content and then page number. So this will be a, can say, table of content. So what are the points in table of content? Then you should write the abstract of your research proposal. So abstract you have to write at the end part, but when you want to submit your proposal, you have to add it or append it in first section. पूरा proposal लिखने के बाद आप abstract लिख सकते हैं. It is not possible to write abstract directly without, can say, handling entire proposal. You have to write it at the end, but when you are submitting it, you should, can say, append it or, can say, adhere it or, can say, put it in first section. After title page, you have to put the abstract or you have to adhere the abstract in that. So what is there in this? An abstract is an outline or brief summary of research proposal. You have to write a brief summary of your research proposal. It should include some introduction part, or it should have an introduction, aims of the study, and body and conclusion. So main title उसमें क्या होगा? Introduction का थोड़ा part में आपको brief introduction देना है. Then what is the main aim of your study? And then you have to add some keywords. Based on keywords, you have to write the body of your abstract, and then finally what will be the expected conclusion. So this is the abstract, and that abstract should be, can say, given in brief, maximum 200 to 50 words में आपको लिखना होता है. It is well written paragraph. Basically, abstract is what? It's a well written paragraph. It must be exact in wording and need to be understandable to a wide audience. किसी के भी पास जाएगा आपका proposal, the person should understand it, what is there in your proposal. So once I read abstract of the research proposal, I'll come to know what is there in this. पूरा abstract पढ़ने के बाद लोगों को पता चल जाता है कि अंदर क्या होगा. If your abstract is not good or not ideal, the proposal will be not good. ऐसा उनका कुछ शक हो सकता है, मन में आ सकता है, maybe उनका logic ऐसा होगा. So you need to write a correct and, can say, ideal abstract, and, can say, put it at the first pages of your proposal. It should include essential keywords. So whatever, can say, theme is there, so that keywords should be included in the abstract. So maximum 5 or 6 keyword should, can say, be appended here, or maybe at the end you have to write keywords, or you have to, can say, write your abstract around the keywords. Okay, abstract must be of 200 to 50 words. A pictorial abstract is designed perfectly and gives the entire idea about your research proposal. Now people are interested in writing, or, can say, designing pictorial abstract. अभी आप pictorial abstract भी बना सकते हैं. So previously we used to write in text form, or, can say, एक हम paragraph में लिखते थे. अभी लोग क्या करने लगे, एक pictorial abstract भी बना सकते हैं, and that pictorial abstract gives clear cut idea of your entire research. So abstract is essential part in any proposal. It helps the viewer, or, can say, analyzer or reviewer, to understand what is there in the proposal. Okay. The next part is title of your proposal. The title should be clear, concise, and accurate.
टाइटल ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा, ए सिंपल टाइटल, बट दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड एक्यूरेट। क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए। इट शुड गिव आइडिया ऑफ टोटल प्रपोजल इंक्लूडिंग प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व। और जो प्रॉब्लम आपने लिया है उसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे, हाउ टू कैन से find out solution for this problem. So you should get ideal title so as to what can say understand the entire proposal, इसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा। The viewer or reviewer और जो analyze करेगा, that person should understand what is your problem and how will tackle that problem. So short but sweet title ऐसा भी नहीं, long भी title नहीं, एक ऐसा title आपको चाहिए, it should be appropriate to the entire proposal. So title should be very clear, concise and accurate, and it should give idea of the proposal including problem that is to be resolved. So it should get reflected in the title, whatever problem that you want to resolve, that should get reflected in the title. So this is what about research title. So deciding title is most important. So many times it happen, when you're submitting your proposal to PhD, and maybe after some time you get letter from university that your title is not appropriate, you have to change the title. So again, you have to change the entire title. Sometime you have to submit the entire proposal. So there are three or two different types of remarks you'll get in the proposal where is not good according to the theme, or can say according to the rules and regulation given by UGC. So title of research proposal is what most important. It should be catchy, it should be accurate, it should be, can say, very clear, and that should reflect the problem and the solution that you want to give to the problem. So these two things are most important in the title. Okay. The next introduction is basically background of your research proposal. Introduction is basically the background of your research proposal or background of the research problem. जो problem आप solve करने वाले, resolve करने वाले, that is what the problem. And in introduction, you write background of that problem. So should provide background information or context about research problem, describe research question. So you have to describe the research question in introduction. So you have to give brief introduction about your research question. What is question? Accordingly, you have to write what is the exact problem and how to resolve that problem and what will be the case outcome of that. Probable objectives and hypothesis. Again, introduction should include some probable hypothesis and objectives. एक short में आपको आना चाहिए. Explain the importance of research. You should explain in detail or in short, whatever, in brief, the details of, can say, importance of your research. So these 3 points are necessary when you are writing the introduction of any research proposal. First, research problem, describe research question, probable objectives and hypothesis, then explain the importance of research. So objectives are basically based on your aim. Main problem के ऊपर आपके objective based होते हैं, and based on that objective you'll formulate the hypothesis. So there may be 2 or 3 hypotheses based on 2 or 3 objectives, and then you have to test this hypothesis with certain methods, or can say methodology, and then you can find out the result. So after the end of your research work, you'll get some, can say, data, and that will have some importance in society or in industry. So that should be included. Everything should be there in the introduction. So introduction should not be very lengthy, or not should, can say, should not be very short, but it should have appropriate, can say, size and appropriate wording, and, can say, sentences to understand the subject and to make it more clear to the reviewer. Otherwise, you'll not get assistance for this particular research work. So that's what introduction. Then literature review. So we have seen in previous part also what literature review is basically. It should give overview of existing research. So whatever research that is carried out till today, अभी तक जितना भी काम हुआ है, जितना भी research हुआ है, उसके ऊपर आपको काम करना है. So it's what overview of existing research. जितना भी अभी तक रिसर्च बना हुआ है, रिसर्च पब्लिश्ड है, अनपब्लिश्ड है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसका एक ओवरव्यू आपको देना होता है. That's what review of literature. It should give overview of existing research, or it gives overview of existing research. You need to critically compare and contrast prior studies. आपके जो बेसिक स्टडीज है पहले वाले,
जो भी आपके पास है, वट एवर स्टडीज और पेपर दैट आर विथ यू or can say references that are with you, you have to analyze them critically, read them critically, and then you have to can say compare and contrast. So you have to find out similar things from the papers, and then what are the contrast things or can say dissimilarities are there, or can say like wise you can say you can compare the things and you can contrast them. So some of the authors they are saying that this is true according to them, some of they are saying this is not true according to them. So you have to find out all this, and then you have to compare and contrast. It should report main theories, debates, and methods used by previous workers and what are their results. So whatever theories are there, previous theories, debates and methods, जो भी लोगों ने यूज किए, जो भी theories डेवलप किए और theories यूज किए, और इनसे debates है, methods है, so whatever they are there used by previous worker, and there's or can say results of their research, what are their results, से पूरा आपको स्टडी करना है और आपको उसका एक राइट अप करना है. That's what review of literature. You have to identify weaknesses and strength of published work. So what are the weaknesses and what are the strengths of the public work? जो भी published है उसमें weaknesses क्या है और strengths क्या है उनके, वो भी आपको find out करना है. And should search the gaps and highlight the major gaps or areas where research is needed. So this is what basically a review of literature. First thing आपको करना क्या है? You have to collect all the resources, all the papers, books, novels, monograph जो भी आपको मिल जाते हैं पूरे आपको कलेक्ट करने हैं. Then you have to read them critically and find out can say theories, debates, methods and results in them. You have to compare and contrast them. उसको करने के बाद उसमें weaknesses क्या है, strength क्या है, ये आपको find out करना है. And then you have to find out the gaps, highlight the major gaps, and these are the gaps where I want to work. So for example, एक example मैंने लिया समझो, if I working on can say पर्टिकुलर बिजनेस, एक बिजनेस में मुझे काम करना है और बिजनेस के लिए मुझे एक प्रपोजल तैयार करना है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम बैंक, मुझे लोन के लिए एप्लीकेशन करना है. तो आई शुड राइट अबाउट व्हाट आर द वीकनेसेस एंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, कितना फायदा होगा, कितना मुनाफा मिलेगा, मुझे सब कुछ लिखना होता है. देन ओनली बैंक विल फाइनेंस इट. मेरे पास उसको कुछ असेट्स है या नहीं है वो भी उनको दिखाना होता है. And what will कितने novelty in the business वो भी दिखानी होती है. So that things will be there in the proposal when you want to write proposal for finance in the bank. But if you want to write a proposal for assistance from any national agency, तो उसमें आपको देना होता है कि these are the gaps, अगर इस पे मैं काम करूंगा तो कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं. these results are very useful for the society और इंडस्ट्री के लिए फायदे में आ सकते हैं. इफ द रिव्यूअर थिंग्स और क्या फाइनेंसर आपको पता चलता है कि उनको पता चल रहा है कि आपके रिसर्च में कुछ तो है और ये करने के बाद कुछ मिल जाएगा तो सोसाइटी को फायदा होगा या एजेंसी को फायदा होगा, और देर में भी सब ग्रुप ऑफ पीपल उनको फायदा होगा, और मे बी पर्टिकुलर एरिया में उनका फायदा होगा, पर्टिकुलर किन से लोगों को फायदा होगा, तो डेफिनेटली आपको फाइनेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं. सो दिस is what most important. You have to find out the gaps and highlight the major gaps from published work, and then you can say decide your problem. इसके ऊपर आपको problem decide करना होता है. That's what review of literature. आपको review of literature अच्छी तरह लिखना है, and then finally आपको gaps find out करने हैं, और gap find out करने के बाद आपको problem decide करना है. So from this review of literature, you have to can say conclude scope for your work. What is scope? आपको काम करने के लिए स्कोप क्या है इसमें. यू आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, इसमें आपने बहुत सारे लिटरेचर सर्वे किया है, एंड लिटरेचर सर्वे करने के बाद आपको पता चला कि दीज आर द गैप्स और मुझे यहाँ पर काम करने के लिए स्कोप है. सो यू हैव टू व्हाट नरेट डाउन और कैन से नोट डाउन ऑल दीज गैप्स, एंड फ्रॉम द गैप्स अगर इस पे मैं काम करूंगा तो इस पे फायदा हो सकता है. सो this is scope for work. So you have to justify why your study is important for society and specific domain. जो स्पेसिफिक डोमेन में अगर काम करना है, पब्लिक डोमेन में करना है या कहीं सोसाइटी को फायदा हो सकता है, तो जस्टिफाई व्हाई योर स्टडी इज इंपॉर्टेंट. जो भी आपने गैप फाइंड आउट किया अगर उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको जस्टिफिकेशन है, अगर मैं इसे काम करूंगा तो इतना फायदा हो सकता है. व्हाट योर स्टडी विल ऐड टू द लिटरेचर. अगर मैंने काम किया है
तो दैट स्टडी विल ऐड सर्टेन थिंग्स टू लिटरेचर, नया कुछ मैं डालने वाला, नया कुछ ऐड होगा, क्या नहीं होगा. सो दैट शुड बी कैन से एड्रेस्ड हियर. So what your study will add to the literature or scientific knowledge. If I'm working on this particular topic, whether it will develop some knowledge and will add it to the scientific community or scientific knowledge में कुछ add होगा तो definitely मैं बोल सकता हूँ ये काम करने के लायक है. और possibility to generate industrial product or patent. अगर मैं ये काम करूँगा तो I can have a data and from the data I can design some product or some instrument. एक डिजाइन कर सकता हूँ, प्रोडक्ट डिजाइन होगा या प्रोसेस डिजाइन हो सकता है, एंड दैट इज हैविंग एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री. और आई कैन फाइंड अ पेटेंट और पेटेंट फाइल करके किसी को मैं बेच सकता हूँ क्या. देन ओनली इज पॉसिबल टू गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस, अदरवाइज नॉट. सो दिस आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर स्कोप वर्क के लिए. आपके स्कोप फॉर वर्क के लिए आपको ये तीन चीजें ध्यान देनी है. एंड द थ्री थिंग्स यू हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रिव्यू ऑफ लिटरेचर, from the gaps, जो भी gaps आपको मिले, from the gaps you have to find out all this, and then you have to write down the scope for work, and then you can proceed further. Okay, once you know the scope for work, then you can design the title. जो आपको title है, problem आपको design करना होता है. So this what your main objective or main aim जो आपका रहेगा. So that is based on that gaps. गैप्स के ऊपर आपका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम जो रहेगा उसके ऊपर रहेगा. दैट इज योर टाइटल और द प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम आपने डिसाइड किया है, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव्स. नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? बेसिकली ऑब्जेक्टिव इज अ मेजरेबल स्टेप यू टेक टू अचीव अ स्ट्रेटेजी. कोई भी स्ट्रेटेजी आपको अचीव करनी है, दैट्स व्हाट मेजरेबल स्टेप. ये क्या है? एक मेजरेबल स्टेप है, एंड दिस मेजरेबल स्टेप इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. And you can take this measurable step to achieve the strategy. एक स्टेप, एक मेथड मुझे डिसाइड करनी है और एक ऑब्जेक्टिव मुझे रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी मुझे करनी पड़ेगी और क्या स्ट्रेटेजी मुझे मिल सकती है, ये देने के लिए ऑब्जेक्टिव होता है. सो बेसिकली एन ऑब्जेक्टिव इज अ मेजरेबल स्टेप यू कैन टेक टू अचीव स्ट्रेटेजी. सेकेंड वन इज रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट. स्मार्ट मीन्स वेरी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम कंस्ट्रेंट. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक भी होने चाहिए, और साथ साथ टाइम कंस्ट्रेंट. समटाइम यू नो यू विल हैव मेनी ऑब्जेक्टिव and it's not possible to complete all the objective, and can say it's not possible to find out methods for all the objective and to complete the entire thing within given time frame. So that should be very specific, measurable होने चाहिए, so you can measure certain parameter based on the objective. अचीवेबल होने चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए उसको, और रियलिस्टिक होने चाहिए. So you should have these things in the objectives, otherwise your objective will go somewhere else or can say wrong and get some other result. Based on your objective, you have to decide the hypothesis. So a hypothesis states your prediction about what your research will find. Basically you have to make a statement, आपको क्या मिल सकता है, possibility क्या है. So it is what? A tentative answer to your research question that is has not yet been stated. Hypothesis का मतलब ये होता है, you have to what? Make a statement. ये हो सकता है, possibility is there, but it's not possible to can say immediately कि मैंने अभी बोल दिया कि ये होगा ही, ऐसे नहीं. You have to test it with certain methods. So hypothesis is basically a statement, and that should be tested with experimental design or can say certain experiments. And what is an experiment? Experiment is basically a systematic investigation where the answer is not known. Experiment का आंसर हमें पता होता नहीं. If it is yes or no, we don't know. Experiment करने के बाद ही पता चलेगा कि ये हाँ या ना में है. For example, अगर मुझे एक कोई एक सिचुएशन देता है और उस सिचुएशन में मुझे काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू क्रॉस अ रोड. मुझे रोड क्रॉस करना है, एंड माई स्टेटमेंट इज लाइक दैट आई कैन क्रॉस रोड इजीली विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल. ये पॉसिबल है, कभी कभी पॉसिबल हो सकता है. अगर ट्रैफिक नहीं तो आई कैन इजीली कैन से क्रॉस द रोड. बट ट्रैफिक आ जाएगा या कोई व्हीकल आ जाएगा तो मुझे कभी दिक्कत हो सकती है. या sometime if I'm ill and not able to walk, I may take help of other people. So it is not possible to me
to walk and can say cross the road. So situation क्या है, under that situation you have to work out. So this is very simple example. या दूसरा ऐसा भी हो सकता है, just you can take example, आप सामने से जा रहे हैं और सामने से दूसरा कोई आ रहा है, आप जब जाते हैं तो आने वाला आपको लगेगा द पर्सन विल गिव स्माइल टू मी, वो देगा कि नहीं पता नहीं, द पर्सन इवन विल नॉट लुक टू यू ऑल्सो, वो आपको देखेगा भी नहीं, और देखेगा तो हंसेगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है. सो इट इज नॉट, तो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि व्हाट विल हैपन इफ you'll get answer yes or no, or if I can say have a coin with me and I want to have a tail on the top, so what is the probability? 50%, क्योंकि कॉइन को दो साइड होते हैं, इफ आई टॉस इट आई विल गेट हेड और टेल. इट्स नॉट पॉसिबल, अगर मैं टॉस करूंगा तो मुझे पता चलेगा, अदरवाइज नहीं. सो दिस व्हाट बेसिकली इट इज स्टेटमेंट और टेंटेटिव आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चन. पॉसिबिलिटी मुझे ये मिल सकता है, बट मिलेगा कि नहीं पता नहीं. सो दैट हैज नॉट yet been tested, and that is what the hypothesis. And each and every hypothesis is based on objective. ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होता है. Okay. After objective and hypothesis, the next step is what? Research methodology, design and methods. Based on your hypothesis, you have to design your methodology. आपका methodology hypothesis के ऊपर based होता है. It is not, can say, anything else. Whatever method that you want to use, you are to use that method to solve the problem, to give answer to your hypothesis or statement that you have made. So that's why research methodology में जो भी method आप use करेंगे, every method will depend on your hypothesis. Okay, to solve that hypothesis or can to test that hypothesis, you have to design your methodology. So methods are based on hypothesis to be tested. Methods are what? Basically, they are based on hypothesis to be tested. Focus of the study, philosophy of the research. एक आपका फोकस क्या रहेगा स्टडी का, आपकी फिलोसफी क्या रहेगी, अब रिसर्च जो रिसर्च की फिलोसफी है. सो मेथड्स आर टू बी, कैन से, used to test your hypothesis, or methods are based on hypothesis to be tested. Focus of the study and philosophy of the research. Your research design should have qualitative or quantitative methods. इसमें दो टाइप के मेथड होते हैं, sometime quantitative और sometime qualitative. If you are collecting data, और डेटा में अगर डिस्क्रीट नंबर है, नंबर आप यूज करते हैं, you will get 1 2 3 4 5 is number, and you can tabulate your data. That's what quantitative data. ये quantitative methods सबको follow करने होते हैं. Sometimes qualitative data, you have to take qualitative. Say for example, the color can be quality. It cannot be measured in number. It cannot be measured in number. Color हम number में measure नहीं करते. You can have different types of color. Okay, but you can measure height in, can say, centimeter. You can measure height in, can say, meter. Half meter में centimeter में measure कर say. So height can be measured. So that is coming under quantitative. But color of the flower, color of the eyes, color of, can say, skin, color of, can say, cloth, that can be qualitative parameter. So whatever design you have to use, based on parameter, you have to design your, can say, research methodology with the qualitative or quantitative. So that's what research design में qualitative भी आएगा, quantitative भी आएगा. Describe research design including research approach. You have to describe your research design based on your research approach, data collection method, data analysis techniques, survey, case studies, grounded theory, experimental theory, or experimental, can say, designs. So all these are included in the research methodology. कुछ लोग सर्वे को फॉलो कर सकते हैं, कुछ लोग अब क्वेश्चनर बनाएंगे, will take, can say, data from questionnaire. Some will go for case studies, some will go for grounded theory, some will go for experimentation. So based on your, can say, hypothesis, you have to design your method, whether you have to go for survey. If you want to study population, I should go for survey. If I want to study, can say, certain parameters in, can say, field or, can say, in forest or in a particular population, तो मुझे केस स्टडी करना पड़ेगा. अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, आई वांट टू सी इफेक्ट ऑफ वन थिंग अनदर थिंग, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करने पड़ेंगे. से फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टडी द मेडिसिन और उसका इफेक्ट ऑन, कैन से, माइस, तो माइस विल बी माय एक्सपेरिमेंटल एनिमल, एंड जो मेडिसिन रहेगा दैट विल बी माय, कैन से, केमिकल और, कैन से, पाउडर, जो भी रहेगा. सो आई वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ दैट केमिकल
or that medicine on the experimental animal, तो experimental animal. So you have to decide your method based on your objectives and then you can finalize it. So उसको अच्छी तरह आपको लिखना होता है. If your methods are not validated or case not realistic or not according to rules and regulations और scientific method नहीं रहेंगे तो most probably आपको data अच्छी तरह नहीं मिलेगा. Method should include information about population. Population क्या होता है? Then what is sampling? What different techniques are available in the sampling? Sample size क्या होगा? How to decide sample size? Then selection कैसे होगा आपका? Then what is validity and reliability? Measures क्या क्या हो? Ethical consideration क्या क्या हो? Methods and tools आपको क्या क्या use करने analysis के लिए? So everything are included in research methodology. So first thing जो आपके हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करने के लिए आपको करना क्या है? यू हैव टू डिजाइन योर मेथड एंड फ्रॉम हियर यू हैव टू टेक मेथड. यू हैव टू टेक मेथड्स फ्रॉम नोन सोर्सेस, रिलायबल सोर्सेस जो प्रूवन है उसको लेंगे. ओके, यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल एंड फाइनली you have to even think of ethical consideration. If I'm working on mice, I should take permission from ethical committee because working on animals, it is banned. If I'm working on against human itself, तो मुझे ethical committee की permission होनी जरूरत है. But if I'm working on कैसे plant, तो I am to take permission from biodiversity board. मुंबई का biodiversity board से permission लेंगे. If I'm working on soil, तो then definitely I am to take permission of that particular कैसे जो एरिया का ओनर रहेगा उसका परमिशन लेना पड़ेगा. इफ आई वर्किंग ऑन फॉरेस्ट तो रेंज जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिस उसका परमिशन लेना होता है. सो एवरीवेयर यू हैव टू टेक परमिशन एंड देन यू हैव टू वर्क. सो देयर आर सर्टेन एथिकल कंसिडरेशन. इवन यू वांट टू टेक इंटरव्यू तो पहले उसका कंसेंट लेना होता है, देन उसके बाद इंटरव्यू लेना होता है, अदरवाइज आपका इंटरव्यू ठीक से नहीं जाएगा. सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी कैन सी इंक्लूडेड अंडर मेथोडोलॉजी. And then statistical methods and tools used in data analysis. You have to specify which statistical tool you can apply for analyzing the data. If I want to compare and contrast the things, then I should go for ANOVA, analysis of variance. If I want to can say find out just mean, so I can take data and average उसका find out करके मुझे compare करना होता है. So there may be a comparison, there may be कैसे tabulation data, उसको graphical presentation कैसे करना है. So all these tools और मे बी कैन से जो स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उनको हम यूज कर सकते हैं क्या. सो हाउ वी कैन ट्रीट योर डेटा एंड प्रोसेस योर डेटा स्टैटिस्टिकली, बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट रिजल्ट. अगर मुझे कोरिलेशन करना है तो कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड आउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट. आई शुड नो व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट. फॉर एग्जांपल देयर आर टू थिंग्स टू कंपेयर. अगर मैं एक बढ़ाऊंगा तो दूसरा कम होगा, सो देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन. एक बढ़ जाता है दूसरा अपने आप कम हो जाता है. Sometimes when I increase one, दूसरा भी increase होता है. This is a positive correlation. So how to find out this correlation? There are certain statistical methods available. Sometimes you have to use probability in the research. So probability क्या हो सकता है and whether is what acceptable or not. So that value you have to calculate. तो ये सब उसमें आ जाएगा and that's what statistical methods and tools you have to use to treat your data. तब तक आप एक logical conclusion पे नहीं आ सकते. Okay, so that's what important part. In research methodology, you have to consider all these things and you have to write your methodology in a sequence. पूरा sequence में लिखना होता है, one by one, step by step. You have to write the methodology. So this is your method. If it is scientific work, you have to write scientific method. If it is what can say survey type, you can write survey methods, what are available. If it is sampling type, so what are different types of sampling you have to write in detail. And then definitely the viewer or reviewer will come to know what methods you are following in this, what can say method treatments are given in this, and then you will get correct data or not. He'll come to know based on your research methodology. So this what important part in a research proposal. So once you have a research methodology, you have conducted research, you have conducted surveys, you have collected data, you might have collected observations. ये सब आपको अगर मिल जाता है तो उसके बाद आपका expected conclusion क्या होगा. If I am working on this particular topic, what will be my expected output or outcome of my research. अगर मैं 3 साल काम कर देता हूँ तो 3 साल के बाद इसका outcome क्या होगा. So that's what again important part, expected outcome. So this is basically
लिस्ट द स्कोप ऑफ रिसर्च एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ योर रिसर्च। आपको लिस्ट करना होता है व्हाट इज द स्कोप ऑफ योर रिसर्च। स्कोप क्या है, अगर ये काम करेंगे तो इसमें क्या क्या हो सकता है। इफ आई वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर गैप अ प्रॉब्लम आई मे गेट रिजल्ट लाइक दिस। इफ आई वर्किंग ऑन दिस these are the implications of this। consequences क्या हो सकते हैं, implications क्या हो सकते हैं, and outcome क्या हो सकता है। so you have to give the list of all this in expected conclusions and outcome। specify expected outcome of the research and explain it in brief। आपको एक outcome brief में लिख के देना होता है। so it may be can say 200 word, I can say 100 word का outcome of देते, that's sufficient। but I'm not talking about how many words should be there, but it should be very brief and precise। so reader can understand or viewer can understand this is the expected conclusion। ये conclusion मिल सकता है और this is expected outcome हो सकता है, and definitely this will have can say some value in the society or in public domain। तो इसमें फायदा हो जाएगा। okay? then next part आता है हमारा references और bibliography। okay? so in references you have to use all factual material that is not original to you। जो भी आपने मटेरियल यूज किया राइटिंग के लिए, वट एवर कैन से रेफरेंसेस और कैन से बुक्स आपने फॉलो किए, बुक्स रीड किए, उसमें से कुछ मटेरियल लिया है, वट एवर कैन से रिसर्च आर्टिकल्स यू कैन से रेफर्ड, उनको आपको लिस्ट करना होता है एट द एंड ऑफ प्रपोजल। सो फैक्चुअल मटेरियल दैट इज नॉट ओरिजिनल टू यू, मेरा खुद का नहीं है, बट जिसका जिसका मैंने यूज किया है, वट एवर कैन से लिटरेचर दैट आई सर्व, एंड इसमें जो रिव्यू किया है पूरे उनके नाम जो भी आएगा इसमें। सो ऑल फैक्चुअल मटेरियल दैट इज नॉट ओरिजिनल टू यू मस्ट बी अकम्पनीड एज अ रेफरेंस टू इट्स सोर्स। जो भी है आपने जो जो सोर्सेस यूज किए उसको आपको लास्ट में देने होते हैं। एंड यू हैव टू फॉलो प्रॉपर रेफरेंसिंग गाइडलाइन एज डायरेक्टेड बाय रिसर्च अप्रूवल अथॉरिटी। आपकी जो अथॉरिटी है, से फॉर एग्जाम्पल इन साइंस वी आर फॉलोइंग एपीए मेथड, इन साइकोलॉजी एपीए मेथड फॉलो करते हैं। okay, so you have to follow that particular method। और it may be a Chicago, Harvard और Oxford, जो भी अलग अलग उनके स्टाइल है वो आप यूज कर सकते हैं। so in India generally we are following this APA method for citing can say references or making the list of references। so this is what the reference part। otherwise you can write a bibliography at the end। bibliography basically it includes all the references that you referred and you used in your writing। but in bibliography आप इसमें एडिशन करते जो आपने लिखा भी नहीं बट उसके बारे में सोचा होगा, रीड किया होगा, allied to that everything should be allied in the bibliography। so generally in theses or can say in manuscript we are adding the bibliography, but in research proposal mostly we are giving references at the end। so this is what the reference part, everything should be can say given at the end and that should have some can say context to the written। and then finally you have to give the budget। इसमें आपको budget देना होता है। so at the end of your proposal you should give the budget। so what budget is actually, it gives detail of recurring and non-recurring expenses and also a total and yearly जो भी आपके expenses होंगे पूरा breakdown आपको budget में देना होता है। what recurring and non-recurring, recurring means एक बार आप यूज करते बार बार यूज नहीं करते उसको नॉन रिकरिंग बोलते हैं। जो बार बार आपको यूज करना होगा, बार बार आपको लगे उसको रिकरिंग में डाल देते हैं। सो सम टाइम कैन से व्हाट आर एक्सपेंसेस ऑन डेली वेजेस, लोगों को आपको हर साल हर दिन पैसे देना होगा, हर साल देना होगा, तो रिकरिंग में आ जाएगा। sometime chemicals you require, this is coming under recurring। sometime you can say you require some instrument, तो इंस्ट्रूमेंट एक ही बार आपको परचेस करो तो नॉन रिकरिंग में जाएंगे। सो टू डिवाइड दैट रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग आइटम सेपरेटली एंड पुट इट इन अ बजट। और ये बजट में डालने से पहले आपको सोचना होता है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट कैन से आइटम और गैजेट और इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट जो भी है उसका प्राइस क्या होगा। सो यू हैव टू गो फॉर कोटेशंस, कॉल द कोटेशन, फाइंड आउट एक्चुअल वैल्यू, कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद उसको लिस्ट करो एंड देन दिस विल बी फाइनल प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। इन दैट यू हैव टू कैन से इवन ऐड आपका जीएसटी कितना लगेगा, 18% होगा, 5% होगा, 2% होगा, everything should be calculated and you can give the detail of recurring and non-recurring budget। and also
टोटल जो भी रहेगा पूरा टोटल आपको देना है, 3 साल का या 2 साल का आपका रिसर्च होगा. इफ इट इज माइनर रिसर्च वर्क तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं 3 साल के लिए काम करेंगे. इट इज मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट अगर रहेगा सो यू कैन वर्क फॉर 3 या 4 or 5 years 6 years. इफ इट बजट इज अबाउट 3 लाख 4 लाख 5 लाख तो आपका छोटा प्रोजेक्ट है. एंड इफ योर बजट इज 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा या 50 करोड़ का होगा तो आपका ही बजट बड़ा रहेगा. सो एवरीथिंग यू हैव टू पुट इन द बजट जो आपको चाहिए, इंक्लूडिंग कैन से डेली वेजेस के जो लोगों को सैलरी देनी है, रेम्युनरेशन देना है, जो आपके सैलरी लोग रहे उनका सैलरी भी देना है, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स ट्रैवल कंटिजेंसी इंसिडेंटल जितना भी खर्चा आएगा पूरा आपको बजट में डालना होता है. Then give appropriate estimate of cost depending on the different areas. Then travel plan आपका कैसा होगा, फील्ड वर्क कितना करना है, कंज्यूमर्स में क्या आएंगे, सैलरीज कितने होंगे, सर्विसेज, हायरिंग, रेंटल, इक्विपमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, सब कुछ इसमें आ जाता है. सो यू हैव टू इंक्लूड ऑल दिस इन रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसको डालना होता है. एंड प्रोवाइड एडिक्वेट जस्टिफिकेशन स्पेशली फॉर कॉस्टली आइटम. अगर आपके इंस्ट्रूमेंट कॉस्टली है तो उसको जस्टिफिकेशन है, व्हाई यू रिक्वायर दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिसर्च वर्क. इफ यू रिक्वायर इट, अगर आपके मेथड में उसका नाम कहीं आया नहीं, आपके मेथड में उसका कहीं जिक्र आया नहीं तो डेफिनेटली पीपल आस्क व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. Okay, you have to give justification at the end. Once you give justification in detail, then definitely they'll consider. Suppose you want to buy a software, अगर किसी को GIS मैपिंग करना है, GIS के सॉफ्टवेयर है, किसी को अगर स्टैटिस्टिकल के सॉफ्टवेयर लेना है, इस सॉफ्टवेयर में कॉस्ट 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख. इफ इट इज कैन से एनी अदर सॉफ्टवेयर लाइक कैन से एडवांस एक्सेल अगर आपको यूज करना है या मेटलब यूज करना है या कोई और स्टैटिस्टिकल SPSS यूज करना है, सो दिस सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस, तो उसको आप परचेस कर सकते हैं. बट फॉर दैट यू टू गिव जस्टिफिकेशन, वी डोंट हैव दैट. और इफ यू हैव जस्ट वन कॉपी बट इट्स व्हाट हैविंग ओवरलोड, ज्यादा लोग काम करें तो एक एक्स्ट्रा चाहिए. इफ आई एम हैविंग वन इंस्ट्रूमेंट विथ मी एंड जस्ट 2 people आर वर्किंग ऑन दैट और मैं दूसरा मांगूंगा तो लोग नहीं देंगे मुझे. सो आई शुड कैन जस्टिफाई though they are there in the department, there in my college, or there in can say my laboratory, but there are many workers or can say scholars they are working on this. Many people are researcher or can say principal investigator they are working on this. So it is what occupied most of the times. So I should have one more can say gazette, one more instrument for my research. तो उसको मैं परचेज कर सकता हूँ. इवन ट्रैवल के लिए, so the mode of travel you have to include. If you travel by bus, by train, by air, by own vehicle, तो इतना कॉस्ट कितना आएगा आपको उसका डिटेल देना है. कंज्यूमेबल्स में आपको क्या क्या चाहिए वो सब कुछ देना है. व्हाट सर्विसेज यू आर कैन से हायरिंग, क्या क्या सर्विसेज आपको हायर करने होंगे, किससे करने होंगे, सो उसका कोटेशन, उसका पूरा आपको बजट देना होता है. सो दैट विल कम अंडर बजट. सो एंटायर रिसर्च एंड द बजट शुड मैच. If I am solving a very little problem, but for that problem I am to having can say more budget, I require more budget, तो कोई मुझे पैसे देने वाला नहीं. So if I want to write a proposal, so I should consider each and everything in this budget. Okay, and at the end we want to can say again conclude all this. So these are the different aspects that we have seen, elements of research proposal. So title page that we have discussed, abstract we have discussed is what basically a brief write-up of entire proposal, a precise can say uh, summary of the proposal. Table content is what basically the sequence that can say given of your entire proposal, in what sequence you put what exactly, which parameter, which element. Then introduction is basically background of your research. Literature basically is what review that you have taken from the previous published work. Objective you are decided based on the gaps, and hypothesis that you can decide based on the objective, and based on hypothesis what your research methodology that you would design. So design a methodology based on hypothesis, and then expected conclusion or can say expected outcome of your research, the scope of research implication, then final reference and budget. So these are what the elements of any research proposal. And once you have all these elements with you and how to write all this, then definitely it's possible to you to make ideal proposal and submit it to any agency for financial assistance. So this is what about the research proposal, basics of all this that we have discussed.
Okay, Very nice, sir. Very nice, sir. thank you, thank you. So if anybody is having any question about this or any can say query about this, तो definitely आप discuss कर सकते हैं. Please explain abstract, sir. Abstract. Abstract, no? Yeah, yeah. Okay. Abstract is basically the summary of your research proposal. It should include introduction. It should have, can say, aims and objective in short, and probable, can say, methodology that you are using and outcome of the research. That's the abstract. Abstract is basically summary of entire document. Okay, or can say the things in abstracted form or can say in summary form. That's the abstract. So abstract should be, can say, very clear and can very precise. अगर ये क्लियर नहीं होगा, प्रिसाइज नहीं होगा, तो दैट विल लीड द रिव्यूअर टू When we, yes, when we complete our research project, then and then only we can able to write abstract only. Yeah. correct, Yeah, where you yeah. want to submit your project exactly and what is your problem that you want to resolve, or Okay. what is actually the title of your research or problem of research. Based on that, you have to decide the title and the objectives and the statement of, can say, hypothesis and the methodology. So all this you have to write in brief, in short. This is what basically summary of entire document. So decide, really it required everywhere in each and every, can say, agency or in a funding agency, जहां जहां आपको देना हर जगह लगता है, but it is based on your, can say, aims and objective and title of the, or can say, research problem. इतना आपको abstract लिखना है, बाकी उसमें कुछ ज्यादा नहीं रहेगा, but that should be very precise and clear. Because any time or every time पहले हम लोग देखते क्या है कि summary क्या है, summary से पता कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या होगा. So that summary is most important. Basically, abstract is summary of entire document. Thank you.